राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। As per the guidance of Puj Maharaj Ji, I am here to directly translate whatever Puj Maharaj Ji has said about the glorious pastimes of Shri Priya Pritam in Vrindavan Dham and how to attain their divine transcendental love. So this humble effort has been put forward to reach a wider range of audience who cannot understand Hindi language. So whatever beneficial you find with this discussion, take it as the direct grace of Puj Maharaj Ji, and what all faults, what all mistakes you find, please ignore them, considering me as a beginner. I humbly bow down to everybody present. Our Priya Pritam are having great pastimes in Shri Vrindavan Dham on the land of Shri Vrindavan, and with their Sahachari Vrind, they are showering the rain of ecstasy. And now it's the time the Sakhis have requested, after doing their Shringar Arati, that they've requested Priya Pritam that it's the time that you now just go on for your walk in Vrindavan Dham and admire the beauty that Vrindavan Dham is displaying for you. So our Priya Pritam, with all their Sahacharis, all their personal associates, are having their arms around, are moving in the forest of Vrindavan Dham. And what are the Sahacharis, what are the Sakhis doing? Some are playing beautiful instruments, some are singing, some are making beautiful pathways with the great flowers of Shri Vrindavan Dham of different colors, and our Priya Pritam, passing smiles to each other and to all the Sahacharis, are moving around admiring the great allure, charm of Shri Vrindavan Dham that Vrindavan Dham is displaying to get, so that Priya Pritam can get pleasure out of it. The only reason, the only purpose of each and every particle, of each and everybody present in Vrindavan Dham, is to provide great pleasure, great happiness to Shri Priya Pritam, and everybody is ready to serve Priya Pritam to provide them with that great pleasure. So Vrindavan Dham, all the Sahacharis, do everything, each and every act of theirs is to provide great happiness, great pleasure to Shri Priya Pritam. And now our Priya Pritam, having their arms around, are moving on the great pathways, the great groves that Vrindavan Dham has created, and the great beauty that it is displaying. And the Sahacharis who are there with Priya Pritam, they are discussing that what all great activities, what all great pastimes our Priya Pritam are displaying, are portraying, and they say, Chalal Leela Gatya Kvachidanu Chala Dham Samithunam Kvachit Ke Kinyagre Kritanatana Chanda Kyunikrati Latashlistam Shakhi Pravaramanukurvat Kvachidaho Vidagdvandam Tadra Mata Ihi Vrindavana Bhuvi. Having their arms around, what all Priya Pritam are doing, sometimes they are trying to copy the great walk of the couple of swans, and at sometimes they are making the couple of peacock dance and they are trying to copy them, and at sometimes they are trying to display the intricate patterns that the plants of tamal and the wine of gold is displaying. The way they have intermingled, similarly our
Sham Kamal, our Sham Sundar, and our golden wine Priyaju have created such a form, they have intermingled, they have embraced in such a manner that they are displaying the same pattern. And they are with great ecstasy moving around the forest of Sri Vrindavan Dham. And then the Sahachari says, Kada madhur sarikaha Swaras padmadhyapayat Pradaya kartalikaha Kvachana nartayat kekinam Kvachit kanakavallari Vritatamal leeladhanam Vedagda mithunam tadat Bhutamudeti Vrindavane. At sometimes what they are doing, they are making the nightingale learn the great verses of their divine mystical pastimes. And at sometimes they are clapping the hands and making the peacocks dance. And at the same time they are displaying they're displaying the great love which they exhibit for each other by intermingling themselves, by embracing themselves and creating such forms as if the trees are intermingled with the great vines. And just imagine, by surrendering their everything to the great land of Sri Vrindavan Dham, they are doing all the divine pastimes on this land. And they are very happy, they have great pleasure in their heart, they are full of enthusiasm. And then the Sahachari says, Shanam madhur ganatah Shanam mandahindolataha Shanam kusumavayutah Surat keli shilpehi shanam Aho madhura sadrasa Pranaya keli vrindavane Vedagda varnagari Rasik shekharau khelataha. They are displaying their great love on the land of Sri Vrindavan Dham, and a very intelligent Priyaju and the epitome of cleverness Sri Lalju, Sri Sham Sundar, they are singing, they both are singing together and with great speed. They are sometimes swinging the swings, and sometimes they are playing with the different flowers of Sri Vrindavan Dham. And imagine, sometimes they are playing with the great breeze, great wind of Sri Vrindavan Dham, and they are displaying great activities which are full of love, full of divine nectar, and they are immersing the Sahacharis present over them, present near them. These are the great divine pastimes that Priya Pritam are doing on the land of Sri Vrindavan Dham. And with all these pastimes, from one grove to another, from one pathway to another, they are moving in the various forests of Vrindavan Dham. And Vrindavan Dham is also so much expert, it has all the qualities that it has great ecstasy, great beauty. It has so many different kinds of forests, so many different types of groves, plants, trees. It has such a great scenic beauty that at times when Priya Pritam cross one alley, they cross one grove, they find a new kind of beauty, a new picture in front of them, a new scenic beauty, a new atmosphere. And with all the seasons, with all the great beauty, Vrindavan is at all service to provide Priya Pritam great pleasure. So now, having their arms around Priya Pritam, they are walking in the forest of Vrindavan Dham, and now what happens? Priya Pritam reach the great cottage that has been made by the plants and trees of Sri Vrindavan Dham, and that has been beautifully decorated by Tungvidya Sakhi. Now they reach the cottage of Tungvidya Sakhi, and Tungvidya Sakhi with all their associates, all the Sakhis which are there under her guidance to serve Priya Pritam, have decorated that cottage so beautifully, and they have arranged for a very beautiful flower bed and very delicate, very soft flower
beds have been laid down on, and they've made pathways out of it, and they are ready with great, beautiful, delicate, soft, intricate garlands of the various flowers of Shri Vrindavan Dham to welcome Priya Pritam. And Tungvidya Sakhi is very great at the singing. The main service of Tungvidya Sakhi, the main quality, the main expertise of Tungvidya Sakhi is to sing, and she possesses a great knowledge, great know how to manage all the musical instruments, all the music, and how to sing, what all musical notes to bring in, so that at the right time Priya Pritam can be filled with the great enthusiasm, and she knows how to play which music at which point of time. So the main service of Tungvidya Sakhi is to just make Priya Pritam or fill Priya Pritam with that great divine ecstasy by playing different musical notes, and she knows that at which point of time what all musical instruments should be played, so that could make the mood of Priya Pritam more and more happy, more and more filled with that great pleasure, with the great love for each other. So these are the great qualities of Tungvidya ji with her parikar, with her associates who are ready to serve Priya Pritam at each and every moment. And how our Tungvidya Sakhi dresses up? She wears a very beautiful blue colored cloth, and the sari which she is draping is of the yellow brown color. And all the Sakhis, the main 8 Sakhis who are under her, and there are again numerous Sakhis who are under those 8 Sakhis who are under the direct guidance of Tungvidya ji. And the main 8 Sakhis who are directly under the guidance of Tungvidya ji are Manju Medha ji, Medika ji, Mridu Bhashni ji, Tanu Madhya Sakhi, Gunchura Sakhi, Barangada Sakhi, Madhura Madhumay Sakhi, Madhu Aspanda Sakhi, and Praveen Madhurachana Sakhi. So these are the main 8 Sakhis who are under the direct guidance of Tungvidya ji, and under whom innumerable Sakhis are present to serve Priya Pritam. So these are the main seva, the main service of Tungvidya ji is to provide Priya Pritam the great music, the great appetite which Priya Pritam have for music is fulfilled by our expert Tungvidya ji. And now our Priya Pritam have just arrived the cottage of Tungvidya ji, and there she is welcoming Priya Pritam with very beautiful garlands, and the parikar, the Sakhis who are under Tungvidya ji and all the associates have made Priya Pritam to sit on that great flower bed that they've arranged. It is very soft, very delicate, and it is made in such a manner that it is attracting the heart of all attractive Shri Priya Pritam. And now what has happened? Our Priya Pritam have just sat on it, and they are sitting in such a manner that they could see each other. And what happens when Priya Pritam sit in front of each other? They just get involved in the beauty of one another. And now what has caught the attention of Lalju? It's the nose jewel, the pearl that is hanging in the nose jewel of Shri Priyaju has totally captured the heart of Lalju. And now he has forgot about all his senses, and he's gazing at that great nose jewel, the pearl which is hanging from that nose jewel. And now he has lost, his senses have gone weak, he has forgotten about everything, and now continuously he's just seeing the face of Priyaju. And now the Sakhis are seeing that what is happening. They're watching the great divine love which Priya Pritam are exhibiting, and this happens every time. Lalju, our Shyam Sundar, has so much great attraction for Priyaju that each and every body part of Priyaju is so much
sufficient to attract his mind, to attract his heart. So this time the nose jewel, the pearl from the nose jewel has totally caught his attention, that has totally taken his mind, and now he's getting so much involved in the beauty of that pearl. And now after some time, what has happened? Our Priyaju has given a great sidelong glance to Lalju. So after getting that sidelong glance from Priyaju, he has forgotten, and his heart is now immersed with so much of love that he is unable to bear it. And it seems as if he has been caught into a great flood, into a great thunderstorm of the great divine love which Priyaju is effortlessly showering on him. And now Priya Pritam are busy watching each other. They are in love with each other, and this happens each and every time that once they start to admire each other, then we never know how much time it takes that they just continue to see each other, and there is no duration, there is no methodology to count that what time is spent just admiring each other. So now our Priya Pritam are sitting on that flower bed, are completely involved in the great love for each other, and they are busy seeing each other, and this is the great beauty of their love. This is the great reflection of their love, which is instilled, which is creating that great pleasure in the hearts of Sakhis who are present over there and are seeing our great Priya Pritam exhibiting the great love for each other. हैं वृंदावन के उस दिव्य नवनिवृत्त निकुंज में जहाँ प्रिया प्रीतम की अभी अभी हमारी सहचरियों ने ऐसी सुंदर श्रृंगार आरती की है, और हमारे प्रियालाल जो बहुत ही प्रेमोन्माद से युक्त है, अब उनसे सहचरिया ये प्रार्थना करती हैं कि हे प्रिया प्रीतम, अब आपके वन विहार का समय हो गया है। तो सहचरियों की प्रार्थना पे हमारे लाडली लाल अब वन विहार की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। ऐसी सुंदर वृंदावन की शोभा, वृंदावन धाम की ऐसा सौंदर्य से युक्त वातावरण हो रहा है जो पल पल में हमारे प्रिया प्रीतम के हृदय को पूर्ण रूप से चुरा रहा है, और अपनी समस्त सहचरियों के साथ प्रिया प्रीतम श्री वृंदावन धाम की उन सुंदर वीथियों में वन विहार कर रहे हैं। और कुछ सखियां ऐसा सुंदर गायन कला से युक्त होकर ऐसे वाद्य यंत्रों को बजा रही हैं, कुछ सुंदर सुंदर पुष्पों के पावड़े बिछा रही हैं, और युगल सरकार ऐसे मंद मंद मुस्कुराकर एक दूसरे पर ऐसे सुंदर शोभा का दर्शन करा रहे हैं और कर रहे हैं, एक दूसरे की जो सुंदर मुस्कान पे रीझते चले जा रहे हैं। ऐसी सुंदर शोभा पूर्ण रूप से वृंदावन में जितने भी सब उपस्थित हैं, जो पशु पंछी आदि और जो सहचरिया वहां उपस्थित हैं, उन सभी के हृदय को पूर्ण रूप से चुरा रहे हैं। और जो हमारी सहचरिया हैं, जो सदैव प्रिया प्रीतम को तत्सुख भाव से लाड़ चाव प्रदान करने के लिए तत्पर रहती हैं, वो समय समय पर ऐसी सेवा सामग्री से, सेवा की सौंध से युक्त रहती हैं, ताकि सदैव प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचता रहे, उनकी किसी भी लीला में कोई भी व्यवधान ना आए। और अब वो गान कर रही हैं कि किस प्रकार की लीला हमारे प्रिया प्रीतम जब वन विहार करते हैं तो वो करते हैं, और उसमें वो बता रही हैं कि कभी तो ऐसा होता है कि गलबैया देकर प्रिया प्रीतम ऐसी विलासपूर्ण चाल से चलते हुए, कभी तो हंस हंसनी से मिलकर उनकी चाल का अनुकरण करते हैं, और कभी मोर मोरनी के साथ नृत्य करते हैं और उनको नृत्य सिखाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो तमाल वृक्ष, जो कंचन वेली से लिपटा हुआ ऐसी शोभा से युक्त होकर प्रिया प्रीतम उन लताओं का अनुकरण करके खुद भी ऐसे सौंदर्य से पूर्ण होकर आपस में आलिंगित रूप का ऐसा दर्शन कराते हैं जो सबके हृदय को इतना आह्लाद प्रदान करता है। और कभी वो मधुर स्वर से युक्त होकर मैना को अपने उन श्रृंगार रस से संबंधित श्लोकों को पढ़ाते हैं, और कभी कभी ताली बजाकर ऐसा सुंदर मोरों को ऐसा नृत्य सिखाते हैं, और कभी ऐसी सुंदर लताओं का जो रूप प्रकाशित हो रहा है उनका अनुकरण कर अपनी सखियों को ऐसा सुंदर सौंदर्य दिखाते हैं।
और कभी अपना पूर्ण सर्वस्व वृंदावन को समर्पित कर कर युगल सरकार यहाँ अद्भुत प्रेममयी बड़ी ही रहस्यपूर्ण लीलाओं का अनुकरण करते हैं। ऐसे हमारे प्रियालाल वृंदावन की दिव्य भूमि पर विहरण कर रहे हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, कभी श्रेष्ठ मधुर रस की वर्षा करने के लिए हमारे चतुर शिरोमणि श्री प्रियाजू और चतुर शिरोमणि श्री लालजू महाराज दोनों मिलकर ऐसा सुंदर गायन करते हैं। कभी वेग से हिंडोरों पर इतनी तीव्र गति से झूलने लगते हैं, कभी फूलों से परस्पर खेलते हैं और कभी वृंदावन की हवा के साथ भी खेलने लगते हैं। ऐसे प्रेम से युक्त विविध लीला हमारे प्रिया प्रीतम वृंदावन धाम में प्रतिक्षण करते ही रहते हैं और इसका पान अपनी नित्य सहचरियों को कराते रहते हैं। और ऐसे ही वृंदावन धाम में वन विहार करते करते अब प्रिया प्रीतम तुंगविद्या जी के उस सुंदर कुंज में प्रवेश कर चुके हैं। और जो चतुर शिरोमणि तुंगविद्या जी हैं अपनी सखियों के साथ, अपनी अनुगत सहचरियों के साथ ऐसी सुंदर व्यवस्था, ऐसा सुंदर उन्होंने उस कुंज को सजाया है और ऐसी शोभा उस कुंज की हो रही है कि वो प्रिया प्रीतम के को इतना आह्लाद, इतनी प्रसन्नता प्रदान कर रही है। और उनने क्या क्या व्यवस्था कर रखी है, ऐसी सुंदर विशाल कुसुम शैया की रचना की है, कोमल कोमल बिछौने बिछाए हैं और सुंदर सुंदर मालाओं को उनने तैयार करके रखा है कि जैसे ही प्रिया प्रीतम आए तो हम उनको वो पहना सके। और तुंगविद्या जी जो है वो गान कला में बहुत ही निपुण है और उनकी प्रधान सेवा भी प्रिया प्रीतम को गान कला से और ऐसी ऐसी राग रागनियां को प्रकट कर कर प्रिया प्रीतम को रिझाना है। यही उनकी प्रमुख सेवा और प्रधान सेवा है। गान कला कौशल संगीत द्वारा वो सदैव प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान करती रहती हैं। उनके गुणों का क्या हम वर्णन करें। सदैव लाडली लाल को ऐसे ऐसे मधुर मय संगीत सुनाती रहती है, ऐसे ऐसे उनको हर क्षण पर किस समय किस प्रकार का संगीत, कैसी राग रागनियों का प्रयोग करना चाहिए, इसमें तुंगविद्या जी पूर्ण रूप से बहुत ही उनमें चतुरता है और वो जानती हैं कि किसका कब प्रयोग करना है और कैसी साड़ी वो धारण करे हुए हैं, कैसे वस्त्र वो धारण किए हुए हैं। नील वर्ण का बहुत ही सुंदर उनने वस्त्र धारण किया हुआ है और बहुत ही सुंदर कपिला रंग की साड़ी उनने धारण की हुई है। और उनके अनुगत जो अष्ट प्रधान सखियां हैं, जिनके फिर अनुगत बहुत अनगिनत सहचरियां हैं, उनके उन अष्ट प्रधान सखियों के नाम हैं मंजू मेधा सखी, मेधिका सखी, मृदुभाषिनी सखी, तनुमध्या सखी, गुलचूड़ा सखी, बारंगदा सखी, मधुरा मधुमय सखी, मधु अस्पंदा सखी और मधुरेचना सखी। ये अष्ट सखियां हैं जिनके अनुगत और भी अनंत सहचरियां हैं जो प्रिया प्रीतम को सदैव लाड़ चाव से युक्त तत्सुख भाव में पकी रहती हैं। और अब प्रिया प्रीतम जैसे ही उनके कुंज में आकर उनने प्रवेश किया तो बहुत ही सुंदर पुष्पों की माला से श्री तुंगविद्या जी ने अपने परिकर के साथ प्रिया प्रीतम का स्वागत किया और ऐसे स्वागत सत्कार के बाद उनको उस सुंदर कुसुम सैया पे विराजमान किया। और प्रिया प्रीतम अब इस प्रकार से एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हुए हैं कि वो सदैव की तरह हर क्षण एक दूसरे का चित्त चुराते चले जा रहे हैं। और हमारे जो लालजू महाराज हैं वो प्रियाजू के उस रूप सौंदर्य में ऐसे अटकते चले जा रहे हैं। और इस बार प्रियाजू की जो नाक के बेसर का मोती है वो इस प्रकार शोभा से युक्त हो रहा है कि लालजू के चित्त को पूर्ण रूप से चुरा ले रहा है। वैसे भी लालजू सदैव ही प्रियाजू के रूप में आसक्त रहते हैं, पर आज तो ऐसी शोभा प्रियाजू के रूप की प्रकट हो रही है। उस बेसर के मोती की जो हिलन डुलन है वो लालजू के हृदय को मत दे रही है और वो पूर्ण रूप से आसक्त होते चले जा रहे हैं। कुछ समय बाद जब प्रियाजू ने अपने बंक चितवन से लालजू की ओर निहारा तो ऐसा कटाक्ष उनके हृदय में प्रकट हुआ, ऐसी वेदना, उस प्रेम विरह मिले हुए भी जो अनमिल का भाव उनके हृदय में प्रकट होता रहता है, ऐसी प्रेम वेदना प्रकट हुई कि लालजू और प्रियाजू जो एक दूसरे के
रूप के परस्पर लोभी हैं, वो एक दूसरे के उस प्रेम में बंधे हुए एक दूसरे को निहारते ही चले जा रहे हैं। और ये सुख वहां उपस्थित सभी सहचरियां उस सुख का ऐसे पान कर रही हैं, उसका रसास्वादन कर रही हैं, क्योंकि यही सुख तो इन सखियों का जीवन है। यही सुख तो प्रिया प्रीतम सदैव उन सखियों को पान कराते रहते हैं। और प्रिया प्रीतम सदैव की तरह एक दूसरे के रूप में अटक कर खोते चले जा रहे हैं और अपनी सखियों पर उस दिव्य प्रेम की वर्षा कर रहे हैं।